यदि आपके प्रदेश में साधन संसाधन है लेकिन अच्छा लीडर नहीं है तो निवेश आने की संभावना कम हो जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक ऐसा लीडर है जो इंडस्ट्री को अच्छे से समझता है। यही कारण है कि प्रदेश में अब निवेश के लिए बेहतर वातावरण निर्मित होने लगा है। यह कहना है इंडिया सीमेंट के एमडी एन श्रीनिवास का। एन श्रीनिवास के साथ ही मैग्निफिसेंट एमपी समिट में आए सभी उद्योगपतियों ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भरोसा जताते हुए निवेश की इच्छा जाहिर की। लंबे समय बाद इंदौर में इन्वेस्टर को लेकर कमलनाथ सरकार ने मैग्निफिसेंट एमपी समिट का आयोजन किया। लंबे समय से चल रही तैयारी के बाद शुक्रवार को आयोजित हुए समिट में 900 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली श्री एनपी प्रजापति, सर प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। श्री आदि गोदरेज, श्री दिलीप सांघवी, श्री संजीव पुरी, श्री विक्रम किर्लोस्कर, श्री एन श्रीनिवासन and श्री चंद्रजीत बैनर्जी। And as is tradition, when the ceremonial lamp is lit, we chant the following shloka. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योतिर परम ब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। I vow to you, O light, who bestows upon us auspiciousness, abundance of wealth, good health, prosperity, and destroys intellect's enemy. हेलो, हाँ, बता दिए के उज्ज्वलित प्रकाश के साथ आज इस समारोह का शुभारंभ हो रहा है। An auspicious beginning to the inaugural ceremony with the lighting of the ceremonial lamp. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. Thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Once again, we thank esteemed dignitaries for joining us on this occasion, and of course, all of you delegates, thank you very much for joining us at the magnificent Madhya Pradesh Summit 2019. Okay. सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, उद्योगपति आदि गोदरेज, दिलीप सांघवी, संजीव पुरी, विक्रम किर्लोस्कर और एम श्रीनिवासन मौजूद रहे। 900 से ज्यादा जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में रंगारंग प्रस्तुति के साथ इसका आगाज हुआ। इसके बाद लेजर शो के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया।
Indeed, magnificent Madhya Pradesh, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से. इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मैग्निफिसेंट एमपी का शुभारंभ करते हुए कहा, आप सभी का देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वागत है। मध्य प्रदेश देश का टाइगर कैपिटल है। हमारा मकसद प्रदेश को उद्योगों का हब बनाना है। इंडिया इनक्रेडिबल है, लेकिन मध्य प्रदेश क्रेडिबल है। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि हमने प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल तैयार किया है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति अन्य राज्यों के मुकाबले आसान है। उन्होंने निवेशकों से कहा, आप हमारे शहरों ही नहीं गांव और कस्बों में पहुंचे और वहां निवेश करें। Of industry, distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank you all for being here, and I have great pleasure in participating in this conference and welcoming all of you to the cleanest city. In fact, I want to say is the cleanest state in the country. I thought of being a bit unorthodox and a bit unconventional. Rather than tell you what this conference is, I shall tell you what it is not. It is not a jamboree. You must have seen this for yourself. We do not have here thousands of people milling around like in some mela where you can't even hear yourself. It is not a MOU signing spree. It is not just show and no substance. What we have invited you here today is for a serious interaction of how we can partner with you to bring prosperity to the citizens of our state, to bring more jobs, to create more economic activity, to take Madhya Pradesh to the next level from merely producing commodities like crops and minerals to producing goods and services, processing of these commodities, harnessing the potential of our people and taking advantage and leveraging the locational advantage that Madhya Pradesh offers in a post-GST world. In fact, as all of you would understand, that no state in the country has this logistical advantage. You have heard of Incredible India. So many advertisements, so many campaigns about Incredible India. Indeed, India is incredible. But what we want to showcase you today is a credible Madhya Pradesh. A Madhya Pradesh you can believe in. A Madhya Pradesh you can rely on. A Madhya Pradesh that not sometimes walks the walk or at other times talks the talk, but actually walks the talk. We are here. We are here because we believe in ourselves, in our own credibility. We have invited you today because we think we have something to offer that benefits you as well. We fully appreciate that for investment to be successful, you need good infrastructure, physical and social. In the last 10 months, since our government has been in position, we lost 3 months in the intervening Lok Sabha elections. We have not lost time in doing things that everybody said was impossible, but we specialize in making the impossible possible. To give you a flavor of what we have done very briefly, we have reduced property guidelines to boost real estate. We have commenced work on the metro in Indore and Bhopal. We had a loan waiver scheme. We had promised
the people of the state about loan waiver. We have waived the loans of 20 lakh farmers. That means we have injected that much money into our rural economy. We must not forget that 70% of India, 70% of Madhya Pradesh is agriculturally dependent. They are not farmers. But they're agriculturally dependent. The kirana shop, the small shop in a village, his trade depends upon the purchasing power of the farmer. And it is from rural India, it is from rural Madhya Pradesh, where we have the disposable incomes of our state and our country. I'm differentiating because you see that on all screens, what is the income per capita. But what you do not see in your screen is the disposable incomes. The disposable incomes which creates demand and produces a market for your products. We have also introduced the right to water to ensure that the people in the state get access to water and resources are managed in a sustainable manner. 7 medical colleges and 3 super specialty centers and hospitals have become operational. Special programs we launched for youth empowerment, because the youth is the biggest challenge, not only in Madhya Pradesh, but in this country. The new generation of youth is very different to the generation of youth 20 or 30 years ago. We have the greatest aspirational society on this planet, and the youth are just roaring to go. In industrial policy, we have introduced a land pooling policy. We are the first state to do this for industry. We are having separate discoms for industrial areas with a view to supplying power at competitive prices. In real estate, we reduced the clearances and permissions required for colonizer license from 27 to 5. This is very important because we want to stimulate the real estate sector, give a push to our building industry, which will generate economic activity. One colonizer license for the entire state instead of a separate license for each colony. In infrastructure development, we are developing the Bhopal-Indore industrial corridor with satellite cities. Most cities in our country, particularly in Madhya Pradesh, our cities are exceeding their carrying capacity. As you all know, each city has a carrying capacity. With the enormous urbanization taking place, we have to look at the future. How do we protect our cities, whether it's Bhopal or Indore, from the massive increase of urbanization which is taking place, exceeding their carrying capacity? And that's extremely important. We are not thinking merely of urbanization. We are thinking of suburbanization. How do we develop? How do we develop satellite cities so that we can have dispersal and protect and keep Bhopal and Indore as one of our cleanest cities? We want to create an environment. We want to create an environment where people appreciate that environment in our state. We have introduced EPC contracting for major products, the RRTS, the Rapid Railway Transportation System in Indore and Bhopal, connecting the metro to nearby towns. Similarly, in the hospitality sector, incentives for branded hotels, additional incentives in the tourism sector, starting from bed and breakfast, homestay, to rural homestay. Madhya Pradesh has a huge horizon in the tourism sector, and we want to pursue making Madhya Pradesh into a major tourism hub. We are reviewing the carrying capacity of our national parks. Madhya Pradesh is the tiger capital of India.
If it's the tiger capital of India, it's the tiger capital of this planet. So we want to ensure that our national parks are recognized the world over. We are doing a carrying capacity study to see how many more tourists we can take there. We are having easier norms for resorts and hotels, so that all of you who come from different states don't only come to our cities, but come to our towns and to our villages and see the magnificence of Madhya Pradesh. For the MSME sector, your ancillaries, and for standalone MSME sectors, we are providing additional incentives, and we are providing additional incentives to startup units. Skill development is a major priority because we want to see that we have local skills, and you don't have to hunt and search for skills. We are setting up a global skill park in association with ITE Singapore. Energy, promotion of non-conventional energy, not only that. Storage. The future will be storage. And how do we do that? We were the first state in this country, I think it was in January of this year, that we invited a global expression of interest for storage. And storage is going to be one of the major things in energy for the future. So storage is something, we have the land. New technologies are emerging in storage that will change the landscape of wind and solar. We are installing 2 lakh solar pumps for agriculture. The RESCO model for industries to provide solar energy at reduced rates. Land diversion from agriculture to non-agricultural use. Self-intimation of permissions. We do not want this myriads of approvals. We are simplifying this. Most important of all, we are going ahead with reforms in governance. Everybody talks of reforms, but in Madhya Pradesh, we talk of reforms, but we talk of reforms of governance. And this has been our pursuit in the last 10 months. I began my address by saying that I was going to be a bit unorthodox, be a bit unconventional. I want to end by telling you that unorthodox and unconventional are the hallmark of my government's policy. We are not afraid of doing new things, of doing things differently. If you convince us that something is good for the benefit of our citizens, bring them more jobs, more prosperity, you will find us willing and responsive partners. All too often, events like these are held to attract investors to come. But once the event is over, once the investment is made, government forgets them. I want to assure you that this will not be the case in Madhya Pradesh. We are as much committed to inviting new investment as nurturing those who have already invested. During the focus sessions today, and also during my interaction with you as individuals and in small groups, you can be rest assured that we are listening to you. I assure you, you will feel the difference. There was never a better time to invest in Madhya Pradesh than today. Madhya Pradesh is magnificent. You've just seen that. It has been so in the past, and it will be in the future. And it is magnificent because of what it is, because of its people, not because of one individual or any one event. But what
what you and I can do together is bring credibility to this magnificence. It is for this that we are here today. So I want to thank you all for coming here, for participating in this, and I want to thank you on behalf of the state of Madhya Pradesh. प्रदेश सरकार की नीति और कार्यप्रणाली से सभी निवेशक भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने सीएम कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा, वे खुद एक उद्योगपति है, ऐसे में उन्हें पता है कि उद्योगपति को व्यवसाय में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने नियमों में बदलाव और उसका जो सरलीकरण किया है वे काबिले तारीफ है। ऐसे में कई उद्योगपति यहां निवेश करने पर अपनी सहमति दे चुके हैं। ये मेरा कहना है कि कमलनाथ जी स्वयं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ में उनके प्रशासन का बहुत लंबा अनुभव है। ये दोनों का समन्वय निश्चित रूप से इस समिट को एक नई दिशा देगा और वो नई दिशा बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे कमलनाथ जी को एक नई चीज़ और करना चाहिए, मध्य प्रदेश में एजुकेशन को इंडस्ट्रीज के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए। पिछले 20 सालों में यहाँ पर करीब 250 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे और हर इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। यदि वो सब इंडस्ट्रीज़ के वो दिए गए होते, जो इंडस्ट्रीज़ को आप प्राथमिकता देते हैं, जो प्रिविलेज देते हैं, तो आज मध्य प्रदेश एजुकेशन हब हो गया होता पूरे इंडिया में। परंतु केवल मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की उसको प्राथमिकता नहीं दी गई। उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों की बिल्डिंगें पत्ता गोदाम बन रही हैं, जहाँ कम से कम किसी की तो 20 करोड़, किसी 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं। ये समिट कमलनाथ जी ने जैसा कहा कि हर इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग पॉलिसी तय करेंगे, यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सर 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब कांग्रेस की सरकार है, कितना अंतर अब आप लोग महसूस करते हैं और संभावनाएं कितनी है अब उद्योगों को बढ़ने में? बीजेपी सरकार और कमलनाथ मध्य प्रदेश सरकार में, मतलब कांग्रेस की सरकार में मुझे एक अंतर लगता है कि ये लोग बहुत मेच्योर्ड और वो लोग नौसिखिए थे। वो लोग राजनीति से लेकर बिजनेस के भी नौसिखिए थे और जो काम नौसिखिया को सीखने में जितना टाइम लगेगा उतना सीखा सिखाया आदमी उतने पीरियड में उस काम को आगे बहुत बढ़ा ले जाएगा। मैं जनरल चौक से LNCT ग्रुप का चेयरमैन आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग के क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, दोनों ही मुझे लगती है कि ये एक उत्साहवर्धक नीतियां हैं, क्योंकि पूरे देश में मंदी का माहौल है और मुख्यमंत्री ने आज का जो सेशन लिया है उसमें एक उत्साह का संचार किया है। और यदि जो घोषणाएं की गई है या जो भी चर्चाएं की गई है वह मूर्त रूप लेती है और धरातल पर आती है तो मुख्य रूप से इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा। और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी है और इसके साथ साथ एक शैक्षणिक राजधानी भी है, तो स्किल्ड वर्कमैनशिप भी यहाँ से मिल सकती है और सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पहले से ही डेवलप्ड है और दूसरा जो है वो जल्द से जल्द डेवलप किया जा सकता है। और अभी जो 2 दिन से जो मीटिंग हुई है उसमें भी उद्योगपतियों ने इंदौर और आसपास के क्षेत्र में ही निवेश की घोषणाएं की है और जो नए नए क्षेत्र सरकार ने चुने हैं वह वास्तव में तारीफ़ काबिल हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जैसे बात हुई है तो मुंबई जो माया नगरी है वह इंदौर से बहुत पास है। फिल्मों की काफ़ी संभावना है और कम बजट में यहाँ फिल्में भी बन सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर अब ट्रेन की भी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। रोड से तो इंदौर पूरे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंदौर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वह कनेक्टिविटी पूरे देश से है, एक सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से सबसे बड़ा एक हब है ट्रांसपोर्ट का यहाँ। तो इसका फ़ायदा भी सभी कंपनियों को लॉजिस्टिक में मिलता है और ये सब चीज़ें यदि मूर्त रूप लेती है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बशर्ते कि स्किल्ड वर्कमैनशिप रहे, स्किल डेवलपमेंट पे काम हो और पूंजी की उपलब्धता हो, लोन इजीली मिल जाए। आज भी इंडस्ट्री को जूझना पड़ रहा है लोन के लिए। जिस तरह से बाजार की हालत है उसको देखते हुए धरातल पे उतरना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि उद्योगपति भी ठान लें कि हमें काम करना है और देश को और प्रदेश को पूरे विश्व के नक्शे पर उभारना है, क्योंकि अब पूरा विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है, तो संभावनाएं काफ़ी सारी है। और उन संभावनाओं को यदि हम सोचें
तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ और हम ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ में, और मैं बिल्कुल उससे प्राउडली कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पर मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट की तरह से इमर्ज हुआ है, विच इज़ अ वेरी प्राउड स्टेप इन द सेंस इट्स अ वेरी प्राउड अकम्पलिशमेंट कि, और ये एक स्टेप आइसोलेशन में नहीं है। जब हम टाइगर स्टेट बनते हैं तो टाइगर स्टेट के साथ में कंजर्वेशन हो रहा है, टूरिज्म हो रहा है, उसके साथ में वेरियस अलाइड एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। ये सभी इसके साथ में टूरिज्म फोकस एरिया भी बन रहा है। नाउ वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स विद MP टूरिज्म and we hope to have more investment into the same sector. There had been जो सबसे बड़ा पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया है, सिंगल विंडो सिस्टम, आई वुड फोकस ऑन दैट इट इज़ अ ह्यूज स्टेप, बिकॉज ये सही मायने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मतलब आपको जो काम एक साल में सारे लाइसेंसेस, परमिशंस और चीज़ें करने में लगता है, वो अब आपको कुछ महीने के अंदर वो सारे प्रक्रिया होकर के आपको मिल जाएगा। सो दैट आई बिलीव दैट इज़ एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड उन्होंने सीनियर, नॉट जस्ट मिडिल लेवल, बट दे आर गोइंग टू अपॉइंट सीनियर लेवल ऑफिसर्स to give direct approvals on things, and he himself is taking part into it, so that's a huge step. इस समिट में जिस तरह से उद्योगपतियों ने शामिल होकर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है, उससे तो यही उम्मीद की जा रही है, जहां कई लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।